Lesson 14. Overcoat. Welcome back again, dear students and learners. Now we are going to translate lesson 14, part 2nd. This story is about a young man who conceals his poverty by dint of his overcoat. By wearing his overcoat, he seems to be a respectable young man going out on the mall on Saturday evening, but when he's crushed by a truck and dies in the hospital, the doctor and the nurses come to know what a destitute he was. ये कहानी एक नौजवान की है जो अपने कोट का दिखावा करके अपनी गुर्बत छुपाता है। हफ्ते की शाम को बाहर माल रोड पर अपना कोट पहने वो एक मुअज़्ज़ज़ नौजवान नजर आता है, लेकिन जब एक ट्रक वाला उसे कुचल देता है और वो अस्पताल में मर जाता है, डॉक्टरों और नर्सों को पता चलता है वो कितना गरीब था। The owner of the shop, wearing a long robe and a silk turban, greeted him warmly. "I just wanted to see this carpet," the young man said to the carpet dealer. "With pleasure, sir." "Oh, don't bother to take it down. I can see it quite well as it is." "How much is it?" 1,432 rupees, sir." The young man frowned as if to suggest, "Oh, so much." "You have only to select, sir," said the carpet dealer amiably, "and we will reduce the price to the minimum." "Thank you so much," the young man said approvingly. "A fine carpet indeed, I'll come again sometime," and he walked away. लंबा चोगा और रेशमी पगड़ी पहने दुकान के मालिक ने गर्मजोशी से उसका इस्तकबाल किया। मैं सिर्फ ये कालीन देखना चाहता था, नौजवान ने कालीन फरोश से कहा। खुशी से जनाब। ओह, इसे नीचे उतारने की जहमत ना कीजिए, ऐसे ही ठीक है। देख सकता हूँ जैसा कि ये है। कितने का है? 1432 रुपये जनाब। नौजवान ने झुककर गोया मशवरा दिया। ओह, इतने ज़्यादा? आपको सिर्फ इंतखाब करना है जनाब, कालीन फरोश ने मुरव्वत से कहा, और हम जितनी हो सकी कीमत कम कर देंगे। बहुत शुक्रिया, नौजवान ने इत्मीनान से कहा। एक उम्दा कालीन वाकई, मैं कुछ देर में फिर आऊँगा। और वो चला गया। The cream color rose which adorned the lapel of his overcoat had slipped and was about to fall. He adjusted it with a peculiar smile of satisfaction. He was now walking along the pavement near the high courts. He had been roaming about for quite a long time, but his spirits were still high. He was neither tired nor bored. At this part of the mall the crowd of pedestrians had thinned down, and there were quite long stretches of empty pavement between one group and the other. The young man as he went along tried to spin his cane around one finger, but in this attempt he dropped it. "Oh, sorry," he exclaimed, and bending down picked it up. क्रीम कलर का गुलाब जो उसके ओवरकोट के कॉलर को सजाता था, फिसल गया और गिरने ही वाला था। उसने इत्मीनान की अजीब सी मुस्कुराहट के साथ उसे दुरुस्त किया। अब वो हाई कोर्ट्स के करीब फुटपाथ पर चल रहा था। वो काफ़ी देर से घूम रहा था, लेकिन उसके हौसले अब भी बुलंद थे। वो न थका था और ना ही बोर था। माल के उस हिस्से में पैदल चलने वालों का हजूम कम हो गया था, और एक गिरोह से दूसरे गिरोह के दरमियान पैदल रास्ते के काफ़ी लंबे हिस्से थे। नौजवान ने जाते जाते अपनी छड़ी को एक उंगली के गिर्द घुमाने की कोशिश की, लेकिन इस कोशिश में उसने उसे गिरा दिया। ओह सॉरी, उसने चीख कर कहा और नीचे झुककर उसे उठाया। Meanwhile, a young couple who had been walking behind him passed by and went ahead of him. The youth was tall and was wearing black corduroy trousers and a leather jacket with a zip. The girl wore a floppy shalwar of white satin and a green coat. She was short and bulky. The young man was delighted to watch this spectacle, and kept on walking behind. So far the young man had found little to interest him among the persons he had observed that evening. He had been, perhaps, too deeply engrossed in himself. He followed them closely, hoping to get a glimpse of their faces, and to hear more of their talk. इसी दौरान एक नौजवान जोड़ा उसके पीछे चल रहा था, वहां से गुजरा और उसके आगे निकल गया।
नौजवान लंबा था और उसने स्याह कॉर्डुरॉय पतलून और जिप वाले चमड़े की जैकेट पहन रखी थी। लड़की ने सफ़ेद साटन की ढीली ढाली शलवार और सब्ज कोट पहना हुआ था। वो छोटे कद की और भारी भरकम लड़की थी। नौजवान ये मंजर देखकर बहुत महजूज हुआ और पीछे पीछे चलता रहा। अब तक इस नौजवान को उन लोगों में कोई दिलचस्पी नहीं थी जो उसने शाम को देखे थे। वो शायद बहुत ज़्यादा अपने आप में मगन था। वो उनके चेहरों की एक झलक देखने और उनकी मज़ीद गुफ्तगू सुनने की उम्मीद में उनका करीब से पीछा करता रहा। By now they had reached the big crossroads near the general post office. The pair stopped for a moment, then after crossing the mall headed toward McLeod Road. When the couple had walked some 100 yards ahead of him, he hurriedly moved after them. Hardly had he reached halfway across the road when a truck full of bricks came from behind like a gust of wind and crushing him down speeded off towards McLeod Road. The driver of the truck had heard a shriek and had actually for a moment slowed down, but realizing that something serious had happened, had taken advantage of the darkness and had sped away into the night. 2 or 3 passers-by who had witnessed the accident shouted, "Stop him! Take the number," but the truck was no more to be seen. अब तक वो जनरल पोस्ट ऑफिस के करीब बड़ी सड़कों पर पहुंच चुके थे। जोड़ा एक लम्हे के लिए रुका, फिर माल क्रॉस करने के बाद मैक्लोड रोड की तरफ बढ़ गया। जब वो जोड़ा उससे कुछ 100 गज आगे चला तो वो जल्दी से उनके पीछे चला गया। मुश्किल से वो सड़क के आधे रास्ते पर पहुंचा ही था कि ईंटों से भरा ट्रक हवा के झोंके की तरह पीछे से आया और उसे कुचलता हुआ तेज़ी से मैक्लोड रोड की तरफ बढ़ा। ट्रक के ड्राइवर ने एक चीख सुनी थी और हकीकत में वो एक लम्हे के लिए सुस्त हो गया था, लेकिन ये समझते हुए कि कुछ संगीन हो गया है, उसने अंधेरे का फ़ायदा उठाया और रात में तेज़ी से भाग गया। 2 या 3 राहगीर जिन्होंने हादसा देखा था चीख कर कहा, "उसे रोको, नंबर देखो," लेकिन ट्रक अब नज़र नहीं आ रहा था। In a short while quite a large crowd had collected. A traffic inspector on his motorbike stopped. The young man was badly hurt. There was a lot of blood about, and he was in a very precarious state. A car was stopped and he was loaded into it and taken to a nearby hospital. When they reached there, he was just alive. On duty that night in the casualty department were Assistant Surgeon Khan and 2 young nurses, Shanaz and Gil. He was still wearing his brown overcoat and the silk scarf. There were large stains of blood all over his clothes. Someone had, out of sympathy, placed the young man's green felt hat on his chest so that it should not be lost. "Seems quite well-to-do," Nurse Shanaz said to Nurse Gil, to which she replied in a lower tone. थोड़ी ही देर में काफ़ी हजूम जमा हो गया। एक ट्रैफिक इंस्पेक्टर अपनी मोटरसाइकिल पर रुका। नौजवान बुरी तरह ज़ख्मी हुआ, बहुत ज़्यादा खून बह रहा था और वो बहुत नाजुक हालत में था। एक कार को रोका गया और उसे उसमें लाद कर करीबी अस्पताल ले जाया गया। जब वो वहां पहुंचे तो वो जिंदा था। शुबह हादसात में उस रात ड्यूटी पर असिस्टेंट सर्जन खान और 2 नौजवान नर्सें शहनाज और गिल थीं। उसने अभी तक अपना ब्राउन ओवरकोट और सिल्क स्कार्फ पहन रखा था। उसके कपड़ों पर खून के बड़े धब्बे थे। किसी ने हमदर्दी से नौजवान की सब्ज रंग की टोपी उसके सीने पर रख दी थी ताकि वो ज़ाया ना हो जाए। "काफ़ी अच्छा लगता है," नर्स शहनाज ने नर्स गिल से कहा, जिस पर उसने धीमे लहजे में जवाब दिया। In the operating theater, the assistant surgeon and the 2 nurses, with their faces concealed behind masks, were attending the young man, only their eyes were visible. He was lying on a white marble table. His hair was still smooth against his temples. The strong scented oil with which he had dressed it earlier that evening still gave out a faint odor. His clothes were now being taken off. The first to be removed was the white silk. Beneath the scarf there was neither a tie nor a collar, nor even a shirt. When the overcoat was removed, it was found that the young man was wearing underneath only an old cotton sweater which was all in holes. Through these holes one could see the dirty vest, which was in an even worse state than the sweater. Layers of dirt covered his body. ऑपरेशन थिएटर में असिस्टेंट सर्जन और 2 नर्सें अपने चेहरे मास्क के पीछे छुपाए नौजवान को देख रहे थे।
सिर्फ उनकी आंखें दिखाई दे रही थीं। वो सफ़ेद संगमरमर की मेज़ पर पड़ा था। उसके बाल अभी तक उसकी कनपटियों के साथ हमवार थे। वो तेज़ खुशबू वाला तेल जो उसने शाम के अवाइल में लगाया था अब भी एक हल्की सी बू दे रहा था। उसके कपड़े अब उतारे जा रहे थे। सबसे पहले जिसे हटाया गया वो सफ़ेद रेशमी स्कार्फ था। उसके नीचे ना तो टाई थी, ना कॉलर और ना ही कमीज़। जब ओवरकोट हटाया गया तो मालूम हुआ कि नौजवान ने नीचे सिर्फ एक पुराना स्वेटर पहना हुआ था जो तमाम सुराखों में था। उन सुराखों से वो गंदी बुनियान देखी जा सकती थी जो स्वेटर से भी बदतर हालत में थी। मैल की तहों ने उसके जिस्म को ढांप रखा था। All togged up for Saturday night, poor chap. Did they catch the driver? No, he got away. What a pity. He could not have had a bath for at least 2 months. Only the upper part of his neck was clean and well powdered. The shoes and the socks now came off. The shoes were old but brightly polished. As to the socks, in color and pattern the one was quite different from the other. There were holes at the heels, and where the flesh showed through the holes it was grimed with dirt. He was by now dead and his lifeless body lay on the white marble slab. सब हफ्ते की रात के लिए तैयार, गरीब आदमी। क्या उन्होंने ड्राइवर को पकड़ लिया? नहीं, वो भाग गया। कितने अफसोस की बात है, वो कम अज़ कम 2 माह से नहीं नहाया था। सिर्फ उसकी गर्दन का ऊपरी हिस्सा साफ और अच्छी तरह से पाउडर लगा था। जूते और मोजे अब उतर आए हैं। जूते पुराने लेकिन चमकदार थे। जुराबें रंग और पैटर्न में एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ थीं। एड़ियों में सुराख थे और जहाँ जिल्द सुराखों से ज़ाहिर होती वो मैल ज़दा थी। वो अब तक मर चुका था और उसका बेजान जिस्म पड़ा था सफ़ेद संगे मरमर के स्लैब पर। A small black comb, a handkerchief, 6 annas and a few pies, a half-smoked cigarette, a little diary in which the names and addresses of a few people were noted, a list of gramophone records and a few handbills which distributors had thrust upon him during his evening promenade. Alas, his little cane, which was perhaps lost at the time of the accident, was not included in the list. एक छोटी सी काली कंघी, एक रुमाल, 6 आने और चंद पाइयाँ, एक आध सुलगा हुआ सिगरेट, एक छोटी सी डायरी जिसमें चंद लोगों के नाम और पते दर्ज थे, ग्रामोफोन के रिकॉर्ड की फहरिस्त और चंद हैंडबिल जो तकसीमकारों ने उसे शाम की सैर के दौरान ज़बरदस्ती थमा दिए थे। अफसोस, उसकी छोटी छड़ी जो शायद हादसे के वक्त खो गई थी, इस फहरिस्त में शामिल नहीं थी। Happy learning!